Hello students, today we are going to start standard 3rd subject maths and chapter number 6 data handling. Exercise number 6.1 to be continued. Question number 2. Complete the pictograph to represent the given information about favorite holiday destination of student of a class. यहाँ पर टेबल दिया है हॉलीडे डेस्टिनेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन सम सिटी मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी एंड लद्दाख. So and number of students given here Manali 9, Shimla 15, Darjeeling 12, Ooty 6 and Ladakh 6. Now here given blank table, so we draw pictograph represent the given information of number of student. So here holiday destination. So first Manali. Manali. How many students in Manali? 9 students. So we draw here pictograph. 9. Here given ki one face equal 3 student. We draw one face represented 3 student. So we draw pictograph of 9 student. So 3 3s are 9. So we draw 3 faces. 1, 2 and 3. Three faces. Now next city Shimla. So we write here Shimla. How many students in Shimla? 15. So we divide by 3. 3 5s are 15. So we draw here 5 faces. 1, 2, 3, 4 and 5. Because one face is represent 3 students. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 5s are 15. Now next Darjeeling. How many students? 12. So we divided by 3. 3 4s are 12. So we draw here 4 faces. 1, 2, 3 and 4. Four faces. Okay. Now next Ooty. 6 students are in Ooty. So we write here Ooty. And how many faces we draw? 3 2s are 6. So 2. Number of students are there 6. So we draw 2 faces. Next Ladakh. Here also number of students 6. So we draw 2 faces.
Okay, so here complete the pictograph to represent the given information about favorite holiday destination students of a class. जो स्टूडेंट्स हॉलीडे पर अपने पसंद से जाना चाहते थे तो उनका पिक्टोग्राफ हमने इधर कंप्लीट किया है. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2. दिस एक्सरसाइज अबाउट टेलीमार्क. सो वी यूज पिक्टोग्राफ टू represent data with small number. We use pictograph to represent data with small number. For large numbers, it is not possible to draw pictograph. So many picture not possible to draw so many picture. Thus, we draw telemarks. हम पिक्टोग्राफ से सिर्फ स्मॉल पिक्चर ही, स्मॉल नंबर जो होते हैं उनके पिक्चर ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट लार्ज नंबर होते हैं वो पॉसिबल नहीं है ज़्यादा पिक्चर ड्रॉ करने के लिए. सो इसलिए वी ड्रॉ टेलीमार्क्स. हम टेलीमार्क्स ड्रॉ करते हैं. टेलीमार्क्स टू रिप्रेजेंट सच नंबर. टेलीमार्क्स से जो वो नंबर को रिप्रेजेंट, लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश इन एन एक्वेरियम. यहाँ पर हमको डेटा दिए हैं. फर्स्ट कॉलम फिश, स्टार फिश, क्लॉन फिश, गोल्ड फिश, एंजल फिश, कैटफिश, एंड हियर ड्रॉ टेलीमार्क्स. So we find out number. Here write we number. Okay, in aquarium different types की फिश है एक्वेरियम में, तो ये डेटा वो फिश को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड टेलीमार्क्स ऑल्सो रिप्रेजेंट different types of fish. So we find out number of fish. Okay, now here first starfish. So this telemarks first vertical line, one vertical line, 2, 3, 4 vertical line and one slanting line. So represent number of 5. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. So 5 1 is 5, 5 2 is 10. 10, 11, 12, 13. How many starfish? There are 13. So we write here 13. Clownfish 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we write here 7. Next, goldfish. 1, 2, 3, 4, 5 and 5, 10, 5 3s are 15 and 1, 16. So, number of goldfish 16. Angelfish 5, 6, 7, 8, 9. So, we write here 9. Catfish 5, 5 2s are 10. 11, 12. So we write here 12. Now we find out total fish. So here 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 and 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. So total fish 57. Okay, so our tally marks number are completed. Now next, here are given some question. Fill in the number column and answer. We write number on column and answer the following question. Given some question, we write answer. Which fish is found maximum in the aquarium? हमको फाउंड करना है, फाइंड करना है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फिश एक्वेरियम में कौन सी है. सो 16 गोल्ड फिश. विच फिश? गोल्ड फिश. सो वी राइट हियर गोल्ड फिश. गोल्ड फिश is maximum in the aquarium. How many fish are there in all? टोटल कितने फिश है वहाँ पर? सो वी राइट हियर टोटल फिश 57. सो वी राइट हियर 57. ओके. हाउ मेनी गोल्ड फिश आर देयर? गोल्ड फिश कितनी है वहाँ पर? सो गोल्ड फिश 16. सो वी राइट हियर 16. So you understanding tally marks and their questions. Now next question. Question number 2. Nilesh goes to a park. Nilesh goes to a park with his family. There he sees a variety of birds and animals. Their data is given below. Complete the tally table using tally marks and answer the given questions that follow. नीलेश जो था वो पार्क में गया अपनी फैमिली के साथ. देयर ही सी उसने वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स देखे. उसके डेटा नीचे इस टेबल में दिए हैं. सो कंप्लीट द टेबल. ये टेबल है उसको टैली मार्क्स से कंप्लीट करना है. एंड हियर गिवन सम क्वेश्चन. सो आंसर द गिवन क्वेश्चन दैट फॉलो. सो फर्स्ट हियर गिवन एनिमल्स स्पैरो, पैरट, डॉग, स्क्वेरल, crow and rat. This column tally marks and number of animals. So first sparrow. So how many sparrow see Nilesh? Here given birds and animals name. First sparrow. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So how many sparrows see? 7. So we write here number 7. First we write number, after we draw tally marks. Okay. Now second parrot. So how many parrots there? 1, 2, 3, 4 and 5 parrot. How many parrots there? 5 parrots. So we write here
5 number. Okay. Now dog. So how many dogs? See there. 1, 2, and 3. There are, Nilesh, see 3 dogs. Okay, we write here 3 number. Okay, now next squirrel. Squirrel. So we count the squirrel. How many squirrels? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many squirrels? Nilesh, see 6 squirrel. So we write here 6. Okay. Crow. So 1, 2, 3, 4 and 5 crow. How many crow? See Nilesh, 5 crows. 5 crows. Nilesh, see in the park. Now next animal, rat. So we count number of rat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 rats are there. Okay. Now we draw traily marks. Okay. Sparrow. Number of 7. So 1, 2, 3, 4 and 1 line, 5, 6, 7. Now next parrot. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3. We draw 3 vertical line. 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 6. Okay. Now crow. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we complete the table using tally marks. Okay. Now here are given some question. We given answer and option also here. How many dogs and rat did Nilesh? नीलेश ने कितने डॉग्स एंड रेट्स देखे? तो हाउ मेनी डॉग्स? नंबर ऑफ डॉग्स 3 एंड रेट्स 8. 8 and 3 11. So the answer is 11. Correct answer. Which animal did he see the most? उसने सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल देखे? Which animal did he see the most? कौन से एनिमल सबसे ज़्यादा देखे? So animals here are given.
birds and animal. So animals red. 8, number of 8. 8 red is see there. The most. How many birds did he see in all? टोटल उसने कितने बर्ड्स देखे? Only birds, not animals. How many bird did he see in all? So 7 sparrow, 5 parrot, 12 and 5 crow. So 12 and 5, 17. Here given answer 19, 18, 17. So 17 is right answer. Now next question. How many more squirrels did he see than dog? डॉग से कितनी ज़्यादा स्क्विरल्स देखी? सो डॉग 3 एंड स्क्विरल्स 5. ओके, डॉग्स 3 एंड स्क्विरल्स 6. सो हाउ मेनी मोर स्क्विरल्स? कितनी स्क्विरल्स ज़्यादा देखी? 3 तो डॉग है. ओके, see then dog. So 3 more squirrels he see than dog. Dog से dog 3 है और 6 squirrel है, तो 3 उसने ज़्यादा देखी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स डिड ही सी? टोटल उसने कितने बर्ड्स और एनिमल्स देखे? सो वी काउंट इट. 7, 5, 12, 13, 14, 15 and 6, 21 and 5, 26 and 8, 34. So 34 animals did he see. Okay, you understanding our chapter data handling, pictograph and telemarks.